So hello everybody, in this video lecture, we will be going with the chapter number 8 of the class 11th physics book, which is electric field. And in this video lecture, we will be covering the first topic of that book, which is Coulomb's electrostatic force or Coulomb's law of electrostatics. I will be covering that topic in detail, so don't forget to watch the whole video because it is very important. So I have prepared my own notes, so I'll be teaching from that. But we should open chapter 2. Coulomb's law, and then like electrostatic force. So starting with this, which is electrostatics, we should know that electrostatic. What is electrostatics? It is a branch of physics which deals when charges are in rest. We all know that there are two types of no, not two types of charges, but there are moving charges, and moving charges are called electricity or current electricity. But we also discuss in the charges in rest in physics. So electrostatistics is mainly concerned with this. The Coulomb's law was given by Charles Augustin de Coulomb. Okay, it is also known as inverse square law by universal law, and it was derived or was the what happened actually that Charles de Augustin, after the 200 years of the discovery of the experiment of the universal law of gravitation, he made a law, or he derived a principle or law which was named as Coulomb's law or universal law of electrostatics. It was inverse. It is also known as inverse square law, and it was given in 1784, and it was discovered by the experiment was that was or the instrument that was used to discover this law was torsion balance, same as that was used in law of gravitation. Earth has zero potential. What is written over here? Okay? Earth has zero potential. We know if you are standing on floor or if you are walking on a road. So are you attracted by the charges of that field? No, definitely not. There is a gravitational force that attracts you towards the ground, but no electrostatic or electric field or electric force that attracts you toward the ground or repulses you. If there are any repulsion forces on the ground that makes you or that makes you up or hires you up when you are on the ground? No. So which means that Earth has zero potential, which means it is a neutral body. Okay. We have discussed that this law was mainly concerned with the magnitude of two charges and the distance between them. Okay. I know that we have discussed it in metric class 2, so I don't need to discuss the repetitive definition of that chapter. We will be going with the detailed section of Coulomb's constant and explaining the overview of this. Now every body in the universe attracts or repels every other body with a force which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance. Overall saying, consider two bodies. Consider Earth, consider Sun. Okay? These two bodies, oh, which is Earth and one is the Sun. This law states that these two bodies attracts or repels each other with a force. Okay? They have a force of attraction or repulsion in between them. Okay? A force of attraction or repulsion between them, which is directly proportional to the
product of masses. The product of masses means the mass of this one or the mass of this one. Product of charges. Sorry, I have written over here masses. Please correct it. I'll be correcting it too. Its charges. And inversely proportional to the distance between them. What does it say? The charge of this body, the charge of this body and the charge of this body multiplied together, okay, which will be directly proportional to the force. Means the higher the charge, the higher the force, which is directly proportional. But here comes one thing more. But it is inversely proportional to the distance of a square, which means the larger the distance, the lesser the force. Increasing distance will decrease force because they are in the inverse relationship. I hope you would have understand this, that force directly proportional to the charge of Q, the body 1 and charge of body 2, and inversely proportional to the square of the distance between them, in between them. The distance would be taken from the body center of the bodies, will not be taken from over here or from the edges, it will be taken from the center of the bodies. That is the thing that needs to be understood or clear. For example, you have two wires in the same direction. What kind of force would they attract? What kind of force would they have in between them? Attraction or repulsion? How would you know this? There's a simple question. And you can use common sense over here. So, what happens? Okay, what happens? For example, you have a wire. It have north pole over here. And this wire have north pole over here. But where would be the south pole? Okay. And for example, this have the south pole over here. And this have the south pole over here. Now, what will happen? What will happen that these two poles, which are opposite, will attract each other. Okay, what will they do? They will attract each other because opposite charges attract and similar charges repel. So, what do we understand? The two wires in which the current is flowing in the same direction, like you have a wire. Like this current flowing from here to here, the second wire from the here to here. So it have north pole over here, it have south pole, it have north pole, it have south pole. So these north and south pole, sorry. And they have north pole over here. These north and south would be attracted. So you simply understood that they have north, south, and north pole. I'm not going in the detail of north and south pole because I think that these are the things that we already know, and it will be useless to waste our time on that stuff. Up here, I have a graphical representation of this, and one more thing, and mathematical representation of this chart. Okay. I have not written the mathematical representation over here because I thought that would be too basic, but I should write it, okay? F is equals to K Q1 Q2 divided by R power 2. You should understand, this is charge 1 and this is charge 2, okay? This is the distance between them. What is? This is the distance between them, which is, for example, let's say R. Okay, that's R. The distance between them is R. The charge was named as Q1 and Q2. So what happened? It become F directly proportional to, we will write mathematically over here, F directly proportional to Q1 into Q2 and F directly inversely proportional to R square. Okay, R square. So by combining that both equation, we got F directly proportional to Q1, Q2 upon R square. But when we need to remove the sign of the proportionality, we have to place a constant, which is Coulombs constant. And this video lecture will be mostly concerned on this Coulombs constant, and we'll be discussing I will be explaining in detail the concept of K with permittivity.
Now force can be attractive or repulsive. How will we know that? We will be knowing that because of the positive and negative signs. If there will be a, like for example, let's say here there will be a proton and an electron. So the proton will possess a positive and it will possess a negative charge. Okay. And the difference. And the answer will be negative charge. We know that. Okay. So the negative will be representing attractive forces over here. And if two same charges, they will be positive. For example, let's say there will be two electrons, so minus minus positive, which will be showing that it's a repulsive force. I'm now discussing Coulomb's constant, okay, which we know कि कहाँ पे आता है, F is equals to K Q1 Q2 upon R square. अब जो Coulomb's constant है, okay, 9 into 10 power 9, okay, Newton meter square per Coulomb square इसकी वैल्यू. अब कैसे है? We'll be discussing this too. Wait. Okay. Let's say अब हमारे पास है F is equals to K Q1 Q2 upon R स्क्वायर. जब हम इसको शिफ्ट करेंगे आर स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इसमें हो जाएगा, और जो Q1 Q2 are multiplied over there, they will come over here and which will be the K. Okay, this will be the value of K. I hope and I consider that you know these basics of ninth and metric, and I'm only teaching first int over here. Okay, not going into detail. So what happened? This become the value of K. क्या बन गई K की value FR square upon Q1 Q2. So we got we got the unit 2. F is for Newton into meter square, which is Newton into meter square, and there we have two charges, Coulomb 1, Coulomb 2, which will be multiplied and will become Coulomb square, Newton meter square per Coulomb square. Okay. Now I have converted over here this in the kilogram MK system. So Newton, we know that Newton is equals to kilogram meter per second square, which is multiplied over here by meter. So meter is equals to meter cube, and यहाँ पे ये भी हमारे पास डिवाइड में, और we will be reciprocaling it, तो ये हो जाएगा 1 upon cube और like कूलम स्क्वायर. तो किलोग्राम मीटर क्यूब और 1 upon कूलम जो हो जाएगा, और into सेकंड से उसको कूलम को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो will be become this किलोग्राम मीटर क्यूब पर कूलम स्क्वायर per second square. Coulomb square into second square. Okay. It is originally C. We represented by K, but it is C. There are two names of this constant: Coulomb's constant and electrostatic constant. We took it as electrostatic constant because this is the force that is determining electrostatic. This is the electrostatic force that we determine over here. It depends on the nature of the medium. Okay. Present between two bodies. जो K की वैल्यू होती है डिपेंड ऑन द मीडियम, बट यू विल से कि हमने इधर इसको क्यों लिया, फिर हमने कांस्टेंट क्यों लिया. दिस नॉट कांस्टेंट एक्चुअली. ये जो वैल्यू है K की, ये फ्री स्पेस या वैक्यूम हम कहते हैं जिसके लिए, उसके लिए है, ठीक है. बट देयर विल बी अनदर वैल्यू फॉर एग्जांपल ऑयल, फॉर वाटर, for instance oxygen, for nitrogen. There will be different values of K for different mediums. It depends on the medium present between two bodies. For example, there are two bodies, हम इनको space में consider करते हैं, तो we consider that there is no anything and it's vacuum over here. But if we took them inside the water body or like inside sea, so there is water, and the water की quality भी है, salty water है, so there will be another kind of dielectric or like the K constant for that will be changed. अब वो change क्यों होगा? We will be also discussing this. K actually is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. We got another constant over here, which is epsilon naught, which is known as permittivity constant. Okay, permittivity constant. This is the epsilon naught, which is also known as permittivity constant. What is permittivity constant? We will be discussing permittivity later on in detail in this lecture, but first of all, let me explain you or give you a little bit introduction of that. Permittivity. What do you understand with permittivity? Permittivity, allowance. Okay, allowing something in free space. Okay, permittivity of free space. There is a difference between relative permittivity and absolute permittivity. It is absolute permittivity, which means just के आगे not लिखा हुआ, you should understand कि ये free space की, okay? और जो relative है वो फिर दूसरे spaces की epsilon को है permittivity. अब वो कितना allow करती है अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करना, ठीक है.
तो जो वैक्यूम है ना वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपने अंदर से अलाउ करती जाने देना। सो दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसी तरह से होता है कि ऑयल की होती, ऑयल की परमिटिविटी हम लेते फॉर एग्जाम्पल 1 होती, तो ऑयल अपने अंदर से क्या होता है 1 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर उसकी एबिलिटी होती है टू पास इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ऑयल। ये होता है। अब 4 पाई क्यों है इधर? 4 पाई इज अ सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर वी नो। अब हमें पता है दिस इज अ पॉइंट चार्ज। ओके, लेट मी गो डाउन। ये एक पॉइंट चार्ज जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया। ओके, इसकी जो वो है फोर्स है वो इन ऑल 4 डायरेक्शन, मतलब सारी डायरेक्शन में लगती है फॉर एंगल। कैन वी टेक इट एज स्फीयर? हमें पता है कि स्फीयर होता है जो पॉइंट चार्ज है। हमने उसको 3D लिया है। 3D लिया है, जो 3D का हमने होल एंगल लिया, मतलब हर जगह एक्ट कर रही है, वो कितनी है 4 पाई। हर जगह पे कर रही है, लेकिन हमें तो सिर्फ एक जगह पे चेक करनी है, क्योंकि जो यहाँ पे अट्रैक्ट कर रही है वो सिर्फ एक साइड पे कर रही है, यहाँ इस साइड पे लग रही है, यहाँ तो नहीं लग रही। तो हमने क्या किया 4 पाई को ले लिया कि एक साइड पे कितनी आ रही है। जब 4 पाई ऑन 100% ऑफ लग रही है या फिर फुल परसेंट ऑफ लग रही है, क्या नाम है, पूरे चार्ज पे, तो एक पार्ट पे कितनी लगेगी उसके? ठीक है, 1/4 पाई लगेगी एक पार्ट। ओके, मतलब हमने उसके 4 हिस्से कर दिए। पूरे में वो लग रही थी कितनी 4 पाई, लेकिन एक हिस्से में कितनी लगेगी ये हमें भी पता है। टोटल 4 पाई है, तो हमने जितना हिस्सा लिया उसको हम 1/4 पाई कर देंगे। So that's why we have taken 4 पाई over here. अगर ये clear ना हुआ हो, so sorry for this, but this is very easy. Okay, it's very easy. I have tried to explain it in the easiest way that I could. Okay, because I face difficulties in learning them, but I try to make it as simple as possible. What is this? दोबारा से एक दफा समझा देती हूँ कि जो पॉइंट चार्ज होता है वो क्या होता है, एक स्फीयर होता है। अब स्फीयर की जो होती है वो सिर्फ हर जगह पे फोर्स लगती है, हर जगह पे, ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ एक जगह पे फोर्स कंसिडर करनी होती है। तो जो उसका टोटल एंगल होता है, या टोटली हमें पता है टी रेडियन में लेते हैं ना हमें इसका एंगल, वो होता है 4 पाई टी रेडियंस, पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल। बट अगर हमें एक पार्ट में लेना है तो हम क्या करेंगे 1/होल कर देंगे। तो अगर हमें 2 पार्ट लेना है तो हम 2/4 पाई करते हैं। बट हमें एक ही पार्ट लेना है तो हम क्या करेंगे 1/4 पाई, जो कि इसकी बनेगी सॉलिड एंगल का स्फीयर बनेगा, या फिर एक डायमेंशन एक जगह बनेगी उसको। अब परमिटिविटी आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टैंड कि ये क्या था कांस्टेंट का सारा सीन। अब नाउ वील बी मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट लेक्चर, और लाइक पहले मैं आई थिंक आई शुड एक्सप्लेन परमिटिविटी। ओके, लेट्स गो विद परमिटिविटी फर्स्ट। अब हमने डिस्कस किया परमिटिविटी, एंड परमिटिविटी वाज सिंपली क्या थी, एक प्रॉपर्टी थी एक मटेरियल की, जो क्या डिस्क्राइब करती थी, दैट डिस्क्राइब द प्रेजेंस के उसके अंदर कितनी ये वो है, वो कितना रिस्पॉन्ड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को। अब फॉर एग्जाम्पल ये क्या नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है, वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर है। तो वैक्यूम कितना अलाउ करता है 8.85 इंटू 10⁻⁵। यही ऑयल होता तो ऑयल की डेफिनेटली कंडक्टेंस अलग होती। हमने समझा परमिटिविटी क्या होती है, अलाउंस। अलाउंस क्या हो सकती है, कंडक्टेंस। तो कितनी कंडक्टेंस है, परमिटिविटी को हम ये लिख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो उसकी कंडक्टेंस डिवाइड डिस्क्राइब करती है, डिफाइन करती है। ओके, सो फॉर ऑयल इट वुड बी चेंज, फॉर sorry, for oil it would be changed, it will be changed, for water it will be changed. But we know, अब you can ask too कि हमने ये एप्सिलॉन नॉट ही क्योंकि हमने वैक्यूम क्यों लिया। We took vacuum because it's a fundamental or very important thing in the universe. Okay, vacuum. अब हम लेते हैं oil, so you could have said कि why didn't we take water, why didn't we take air, but space जो है we can change it by the way। अगर space नहीं है, so for if it is for oil you can change it to the oil permittivity, for water it's water permittivity, and for any other substance another permittivity. But in as a whole in physics we discuss, or we fundamentally take constants as per the vacuum. So that's why हमने the vacuum की
अलाउंस लिए कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना पास करने देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास होने देता है। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज अ होल कांस्टेंट, लाइक जो फ्री स्पेस के अंदर अलाउंस होती है करंट को जाने देने की, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी व्हिच इज रिप्रेजेंटेड एज एप्सिलॉन नॉट, जो कि हम पिछले पेज पे और पिछले लेक्चर वो लेक्चर पेज पे हम देख चुके। अब इट्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है। हमने एक और रीजन फॉर नॉट टेकिंग वाटर, फॉर नॉट टेकिंग ऑयल, फॉर नॉट टेकिंग एनी अदर सब्सटेंस एयर, क्योंकि देयर कैन बी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। हो सकता है कि कभी जो उन्होंने एयर लेके चेक करते वो लोग, उसमें O2 ज्यादा होती, आपके पास O2 कम होती, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती। तो देर आर मेनी रीजन फॉर दैट। तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करें और इस बात को समझने की कोशिश करें। हो सकता है उनके पास वेजिटेबल ऑयल होता है एंड यू वुड टेक ऑलिव ऑयल। हो सकता है आपके पास सॉल्टी वाटर होता है, उनके पास सिंपल वाटर लेते हैं वो लोग। अब H2O दुनिया में इतने सारे टाइप के, इतनी डिफरेंट डेंसिटी है, डिफरेंट वो है, और जो परमिटिविटी है वो उससे अफेक्ट होती है, टेम्परेचर से अफेक्ट होती है, वो प्रेशर से अफेक्ट होती है, वो हर चीज से अफेक्ट होती है। अब नाउ टॉकिंग अबाउट रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव से क्या समझ आ रहा है आपको? मतलब हिसाब से। किसी रिलेटिव का मतलब ही होता है किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी रेफरेंस से। तो इट इज डायमेंशनलेस एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी is, ठीक है। It is true. How well a material can store electric charge compared to vacuum or free? अब this have slight difference, okay? ये एक रेशियो है, ये चेक करते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब किसी भी स्पेस की परमिटिविटी, जो परमिटिविटी हो, सॉरी, किसी भी मटेरियल की परमिटिविटी, फॉर एग्जांपल परमिटिविटी ऑफ ऑयल डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ, सॉरी हमें लेना चाहिए ऑयल, हम इस तरह रख लेते हैं, परमिटिविटी ऑफ ऑयल डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन नॉट, मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो क्या होती है रिलेटिव परमिटिविटी? एनी मटेरियल्स परमिटिविटी कंपेयर टू द absolute permittivity or permittivity of free space. How well a material can store electric charge compared to vacuum or free space. किसी चीज की परमिटिविटी जो कि उसकी प्रॉपर्टी होती है और वेलनेस होती है टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंपेयर टू एब्सोल्यूट एनर्जी और एब्सोल्यूट रिलेटिविटी, सॉरी ये इसका फॉर्मूला है, वी डिस्कस दैट, जो कि मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब जैसे जैसे हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ती जाएगी तो मतलब मोर चार्ज होता जाएगा, ठीक है, मोर एनर्जी स्टोर होती जाएगी, क्योंकि मीनो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन परमिटिविटी ऑफ मटेरियल बढ़ेगी उस तरह से क्या नाम है इलेक्ट्रो रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ेगी। हो सकता है इसकी 1 हो, ऑयल की 1 हो, वाटर की 2 हो और एयर की 3 हो, तो 3 है वाली की ज्यादा रिलेटिव परमिटिविटी होगी एज कम्पेयर टू ऑयल और वाटर। लेकिन ये तो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा तो इसको हम नहीं चेक करेंगे, कोई रिलेशनशिप नहीं है इसका। लेकिन मटेरियल की रिलेटिव वो परमिटिविटी का रिलेटिव परमिटिविटी पर effect है। ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, प्रेशर, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अब रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा होती है, यहाँ पे सिर्फ मैं ये लिखना चाहती थी कि रिलेटिव परमिटिविटी इंक्रीज्ड मींस स्टोर मोर एनर्जी, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। अब यू शुड नो दिस डिफरेंस, आई शुड राइट ओवर हियर, और मैं साथ साथ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ इस बात को। आई थिंक दैट कैन बी डिफिकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ यू, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हमने पढ़ा कि वो क्या होती है 4 पाई, और क्या होती है वो एप्सिलॉन नॉट। अब दिस इज वेरी बैड मैथमेटिकल कीबोर्ड, आई डोंट हैव अ मैथमेटिकल कीबोर्ड, सो प्लीज काम चलने ये बनती है, ओके, के विच इज इक्वल टू के ऑफ ऑफ स्पेस, ऑफ वैक्यूम और स्पेस, ठीक है। लेकिन जब हमें लेनी हो उसकी क्या नाम है, फॉर एग्जाम्पल हमें किसी और डाइलेक्ट्रिक आ गया हो, डाइलेक्ट्रिक हम उस मटेरियल को कहेंगे जो हम वैक्यूम की जगह पे रखेंगे, ठीक है, सिंपल। कोई और हमने डाइलेक्ट्रिक ले लिया, फॉर एग्जाम्पल ऑयल, ओके। अब यू विल थिंक आई एम टेकिंग ऑयल, आई डोंट नो व्हाई आई एम टेकिंग ऑयल, बिकॉज मैट्रिक के अंदर ना वी ऑलवेज यूज टू डिस्कस ऑयल की परमिटिविटी इन दैट चैप्टर, so I didn't understand that at the time, but I used my whole of my mind, I think, to understand that, but I was unable. So I'm just remembering that and revising that thing in my mind. अब dielectric oil है, तो what will be the K of that, और dielectric oil का K क्या होगा, ठीक है। Dielectric is oil और उसका K क्या होगा,
the k will be 1 upon 4 pi, same, and epsilon naught. But there will be a slight difference. It will be multiplied by the relative permittivity of material, like the relative permittivity of oil. ठीक है? So this is the thing जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये बन जाता है, फिर मैंने कहा था कि चेंज हो जाता है. So this means वो ऐसे चेंज होता है कि different for different material. लेकिन वी टेक कांस्टेंट जो हमारे पास वही है जिसकी वो वैल्यू होती है 8.85 × 10 माइनस 12 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन के की जो वैल्यू होती है 9.9 × 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जो हम लेते हैं सिंपल. बट अगर हमारे पास ऑयल होगा, लेकिन इट इज अ वेरी, मतलब अभी you won't be discussing that or you won't be getting some questions like this, but this is something जो I wanted to explain. That is the thing. Okay, we should go now to other chapter. Of this like vector form and नीचे explaining more dielectric. I will be explaining it in dielectric for. अब now understand. अब this was the thing. अब जो हमने नीचे ये पढ़ा, ये वाला चैप्टर पढ़ा, ओके. अब हम इसका रिलेशनशिप समझने वाले हैं. ओके, हम इसका रिलेशनशिप समझने वाले हैं. What happens, देखो हमारे पास क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी जब आ जाती है नीचे, रिलेटिव परमिटिविटी था, इसकी वैल्यू होगी फॉर एग्जांपल 1. लेकिन जब हम 1 की और फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होती है, तो सॉरी हमें मतलब ये पूरी पाई की वैल्यू है हमारे पास जो के है. अब के को क्या किया, रिलेटिव परमिटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, तो के पहले 9.1 था. अब हमें ये बात जाननी है कि जो इसकी फोर्स है वो ज्यादा बड़ी होगी या इसकी फोर्स बड़ी होगी, कैसे पता चलेगा. इसका के कम है तो इसका के ज्यादा है, तो इसकी क्या नाम है, वो हो जाएगी, सॉरी इसका के कम हो जाएगा, क्योंकि के क्या होगा, डिवाइड हो रहा है इसके अंदर. हम 1/4 पाई को नीचे एप्सिड रिलेटिव परमिटिविटी को भी डाउन ही लेके आ रहे हैं, विच इज, और जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो क्या होती है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव परमिटिविटी. अब इतनी बात याद रखना कि के क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी के, so I should write it over somewhere. K is inversely proportional to relative permittivity. I'm writing it here. Okay. तो मतलब जब भी हमारे पास ईयर आएगा, अब फॉर एग्जांपल वाटर का ईयर है ज्यादा है और हमारे पास के में कोई ईयर नहीं है, वाटर का ईयर हो गया 2, ठीक है, 2 हमने वाटर का ईयर लिया और हमारे पास का कोई ईयर नहीं, तो हमारे पास इसका के सिंपल होगा 9 पॉइंट इंटू 10 पावर 9, लेकिन इसका के जो होगा वो 2 से रिड्यूस हो गया होगा, बिकॉज में हमने नीचे 2 भी तो मल्टीप्लाई कराया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके साथ हमने वो मल्टीप्लाई कराया और वो 1 अपॉन है, तो के इनवर्स हो गया. तो यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स जो हो गई वो रिड्यूस हो गई. तो जब हमारे पास दूसरे टाइप के वो फोर्स आते हैं, मीन्स जब हमारे पास दूसरे टाइप के फोर्स आते हैं, लाइक सॉरी फोर्स बोल रही हूँ, डाइलेक्ट्रिक आते हैं, हम चेंज करते हैं डाइलेक्ट्रिक को, तो फोर्स क्या होती है, रिड्यूस होती है. मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, रिड्यूस टू 1/ER रिलेटिव परमिटिविटी की टाइम्स जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है. अब इट चेंजेस विद मीडियम, हो सकता है कि क्या नाम है, कैन बी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मटेरियल यूज्ड. अब कैसे चेंज होगी, मीडियम के साथ चेंज होगी. हो सकता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑयल की कम हो, ज्यादा हो, या उसकी ज्यादा हो, उसकी ज्यादा हो. यू कैन चेक ऑल, देयर इज द लिस्ट अवेलेबल ऑन इंटरनेट, इसको हम चेक कर सकते हैं, तो वो हमें बता देती है अबाउट दैट. अब नाउ डिस्कसिंग वेक्टर. ओके, वेक्टर फॉर्म्स. और ये है कि इलेक्ट्रिसिटी और जो ग्रेविटेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या रिलेशन है. The acceleration of electric energy or like electric force is 10 to the power of 26 times more than gravitational force. Like electric force is stronger than gravitational force. Okay, its acceleration is 10 power to 26 more than जी. यू विल बी सेइंग अभी फोर्स की बात करी थी एक्सेलरेशन के लिए, क्योंकि जब हमारे पास फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन भी होगी डेफिनेटली, तो हमें उसको करना है. वी आर डिस्कसिंग फोर्स टू. तो फोर्स जो होगी इज 10 टू द पावर 36 टाइम मोर देन जी. अब इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर वे मोर पावरफुल देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस दैट वी हैव डिस्कस्ड. अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, यू कैन चेक दिस. द वेक्टर फॉर्म of this is that
the charges, which is a scalar, radius, which is a scalar, which is the magnitude of force, and k is a constant, we know. It's dimensionless. So, but the force is a vector quantity. So we will be adding a r unit vector with that. Now you saw. Then we are multiplying a unit vector with this to give it direction because force is a vector quantity. So we explained this. I'm now talking about units. There are some of the units written, but let's discuss two major important units which are also important in charges. Whereas like which is like 1 unit of charge is coulomb that we know very well. But another unit that is most commonly given in entry tests or like comes as a question in entry test. Ampere second. Ampere second is also a unit of charge. How? Like ampere, ampere is like charge per time. It's current. Q is equals to IT, which means Q upon T is equals to I. So Q upon T into second. As cancelled with each other, it becomes coulomb, and coulomb is a unit of charge. Faraday is also a unit of charge at some extent, but I am not going to explain this now in detail. Now, unit conversion and dimensions are over there. Here we have discussed the dimension and unit of force. Force unit explain. We know that firstly we should discuss the unit of K, then we'll be going on force. The K is equals to FR square upon Q1, Q2 that we discussed in very early, but you can convert it over here too, okay? Force का unit क्या होता है? Newton. R is equals to meter square per Q1 into Q2 जो कि कूलम स्क्वायर हो जाएगा. सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, न्यूटन को हमने कन्वर्ट किया, और ये मीटर क्यूब हो गया, मीटर मतलब में आ गया. तो ये क्या होगा? किलोग्राम मीटर क्यूब हो गया, और डिवाइड बाय ये जो डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे 1 अपॉन कूलम. तो और सेकंड भी जो है वो भी डिवाइड ही है, तो कूलम किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड की स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन विल बी m1L⁻3 T इनवर्स स्क्वायर एंड एम्पियर इनवर्स स्क्वायर. नाउ यू अंडरस्टूड कि ये क्या बना? किलोग्राम मीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर. अब यहाँ पे वी कैन से, अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे. जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? बिल्कुल यही बन जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर. तो वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सेकंड स्क्वायर हमारे पास ही कैंसिल होगा, कूलम का कूलम वैसे ही रहेगा, और 1 m चला गया, 2 m बचा, तो वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ के, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, Q1 की Q2 की वैल्यू कूलम स्क्वायर है, और पर मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर से कैंसिल, कूलम कूलम से कैंसिल, न्यूटन बचा, व्हिच इज यूनिट ऑफ, एंड डायमेंशन इज mL इनवर्स वी नो. I have also discussed charge in this video lecture. I know this would be, or this will become a very long lecture or detailed explanation. It is very detailed, actually. I have also been like a 1 hour recording to that. It's been 1 hour until I'm recording that. Property of matter. The charge is a property of matter or a subatomic particle. Actually, it is a property of matter. Matter made up of atoms. Atom made up of subatomic particles. Experiencing force in electric and magnetic field. ये हम किसी एक प्रॉपर्टी है, just like we have mass. मास एक प्रॉपर्टी है, इस तरह से चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है. इट्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, और जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में शो कराती हैं अपने आप. ये स्केलर क्वांटिटी है. इस फॉर्मूला Q is equals to IT, I is equals to एम्पियर एंड T is equals to टाइम. जब हमें पता चल गया एम्पियर और टाइम है, मास और लेंथ नहीं है, तो छोड़ देंगे. इट इज डिस्क्रीट.
Discrete means it is integral. It is not decimal. It won't be y 1.5. It won't be 1.2. अब एक जो चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, दैट्स द बेसिक चार्ज. इससे नीचे चार्ज नहीं जा सकता. 1.6 इंटू 10⁻19 है. अब जो दूसरा चार्ज होगा वो इसका मल्टीपल होगा, लाइक टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. बट इट वोंट बी 1.5. इट्स नॉट इन डेसिमल पॉइंट एक्चुअली. ओके, हम ले ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इससे ज्यादा छोटे में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करते. इट्स कंजर्व एज लाइक इन एनर्जी इज कंजर्व, कि इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता और इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता. Units written coulomb and ampere second. And here one more important thing, that 1 coulomb is equal to 0.625 into 10⁻19 electron volt और चार्ज ऑफ प्रोटॉन. जो चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है ना, एक कूलम के अंदर कितना होता है? 0.625 इंटू 10⁻19 चार्ज होता है कूलम के एक प्रोटॉन के अंदर. डोंट कंफ्यूज इट विद वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने कूलम होते हैं, वो अलग चीज है. वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, ये कूलम के अंदर कितने प्रोटॉन चार्जेस आ सकते हैं. It's 0.625 into 10⁻19. So I hope you would have understand this lecture. This was a very detailed review of this chapter. So we'll meet inshallah in the next lecture. Allah Hafiz.